was yet another day of drama and disruption in the Rajya Sabha. For the first time, the opposition has moved a no-confidence motion against the chairman of the House of Elders. The opposition claims that Vice President Dhankar is biased and behaves as if he was a spokesperson of the Modi government. The BJP says this is an attempt by the Congress to divert attention from the link that its leaders have with George Soros. The political showdown is escalating. Slogans and showdown in Rajya Sabha continued on Wednesday. The India Alliance MPs upped the ante against Jagdeep Dhankar. For the first time, the opposition has submitted a notice for the Vice President's removal. Signed by 60 opposition MPs, the no-confidence motion against Vice President Jagdeep Dhankar says that his conduct is unbecoming of high-level constitutional authorities and that his term as Rajya Sabha chairman was rife with instances where he acted in a manner that was explicitly partisan and unfair towards members of the opposition. The opposition has also accused Dhankar of making disparaging comments about opposition members. The India Bloc also held a joint press conference where it accused the Rajya Sabha chairman of doing Rajniti and not following rules. कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। The opposition has also accused Jagdeep Dhankar of being government spokesperson. वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्सपर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। बार-बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है। Sir, I'll come to the deputy leader after all. The BJP says that the opposition's no-confidence motion against the Rajya Sabha chair is Congress's bid to divert attention from its alleged links with controversial billionaire George Soros. आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पड़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। In fact, the BJP has made fresh allegations against the Congress, claiming a link between Rahul Gandhi's aunt and Soros. The attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country, देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बनकर के, औजार बनकर के उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। Congress continues to counter the BJP's attack with its protest against Adani. जाति के बात करने वाले एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये किसका असम्मान है? ये किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसका असम्मान है। वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है,
और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। The opposition neither has the numbers nor the time to push through the no trust motion against the Vice President in this Parliament session. But the political showdown is only going to escalate. Bureau Report, India Today. On the first day of the Rajya Sabha, the then Vice President and Chairperson of the Rajya Sabha, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan said, and I quote, "I belong to no party and that means I belong to every party in the House. That is the essence of impartiality." Is Vice President Dhankar living up to that ideal? Have his actions failed to live up to what is supposed to be the role and responsibility of the chair, or is the opposition just looking for some desperate reason to put the Vice President and the office of the chair under pressure so that they get more time to speak and can run the House the way they'd like to run the House? To talk about this, I'm joined on the broadcast by Sushmita Deb, Member of Parliament, National Spokesperson of the Trinamool Congress. She is the one who is part of the party that actually brought this no confidence motion, or the idea of this no confidence motion against the Vice President. I have Aparajita Sarangi, Member of Parliament, National Spokesperson of the BJP. Mahua Maji joins us, Member of Parliament from the JMM. I want to go across and show you some clips of the proceedings of the Rajya Sabha, which will give you a sense of why the opposition claims to be outraged, the charges they're levelling against the Vice President, and then we'll kickstart our debate. Any challenge to the unity of the nation, to the integrity of the nation, from without or outside, requires all of us to offer united challenge. This is not a challenge to one section or the other. It is a challenge to our very existence. We as a nation are committed to fight these sinister forces, these forces that are inimical to India. This inimical force mechanism, a deep state that is evolving, is required to be neutralized by all of us. माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है। आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों की लंबे समय मिस्टर मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct.